start with our first presentation, and the speaker is Dr. Usmanovi Mutiana, who just me. Today's workshop is about neurobiology. And before I start, I would like to share a small story. There was a psychiatrist, there was a nephrologist in a far place in England, and this person got depressed. And he was taken to an asylum, and he was treated for a number of years at the hands of a very famous psychoanalytical experts of that time, likes of Eric Fromm, his trained people. And this patient did not recover. Many years passed, the doctor's practice was gone, the relationships were screwed, and he really thought that his life is over. One fine day, around 1950s, 60s, in 1960, a level antidepressant was launched, and in 50s, tricyclists had already come. And this one new psychiatrist prescribed him an antidepressant. Now this nephrologist, who was so dead, depressed, suicidal, when he took antidepressant, within a few weeks, there was miraculous recovery. Now when he got better, he sued the asylum that they had wasted my time. A big battle started. This is about 1960s. Big house of psychoanalysis and a big house of biological science was just beginning to take its feet. The battle went to the court, and a number of years took. All the big psychoanalytical houses came and fought, and biological scientists came and defended. And at the end, the decision was that that asylum, that hospital must prescribe antidepressants to depressed patients. We are here today after 60, 70 years. After 60, 70 years, there is a debate going on. We are still thinking that whether we should give medication or we should not give medication. Today's story is about that biological fight, which the West won at some time, then they got lost probably, but today I'll establish my case in front of the respected chairperson. So, what happened over the years? What kind of discoveries have been happening all around the year? About 15 to 20 years back, when I was in postgraduate training, I learned that a lot of genetic advancements are going to happen. Genetic study, genome, all these things are going to take place, and wonderful things will happen. And this was about 2004, 6, 7. All the genome has been made. The genes have been studied, thousands of genes. Research projects have been completed in Pakistan, but this information is still lagging behind. Why? Now, whenever we think about any kind of symptom, when I was taught phenomenology, I was very interested in SIMS, Andrew-Sims, this is hallucination, this is delusion, this is second person, third person. But to what significance? If we are not clear about the biology, we will always think it's a psychological thing. It is some kind of, or should I can you check what's wrong with there? It's a noise. So, we have to prove the noise to single ratio. If that ratio gets disturbed, auditory hallucinations can come. If there is some point, some structure is at fault in the brain that has to be sorted out, it's not only the head, it's very dynamic structures. And I will just go through the brain for a short while to see which organ we are talking about, which is the master organ. So these all areas are there. The phenomenon of neuroplasticity has been thrown around for a number of years by the psychologists. No one has abused the term neuroplasticity more than the non-scientific people. They think everything is neuroplasticity.
everything is neuroplasticity. No, sir, everything is not. We will establish this. Yes, please take. Presentation? Sir, presentation is one. That's fine. That's fine. That's fine. I think you start. Okay, so that's fine. So they must be disturbed with us and we will be disturbing them. Radiology. Radiology is I love radiology. We have to learn the brain. We have to write the test. We have to see the MRIs because the cognitive decline we are seeing can be seen on this picture over the period of time. So this is just to show that we have this midbrains, we have insula, we have cerebellum, we have the cortex, and the favorite areas all we'll talk about today is this insula. This is the new subjective center which gives us an evidence for those medically unexplained symptoms. Now we know it's coming from here. We will see the basal ganglia, all the obsessions and the striatum issues. This is the place which is at fault. Hypothalamus, brain's one of the most powerful system. It resides here. So this is just to get you an orientation about the brain we will talk about today. And then there are different sections. And this is the area which is very important in Alzheimer's. So if you get this section over the period of time, this section keeps on going. It kind of squeezes down and the hippocampus will stop working. This area is so powerful that even 1 nanogram difference in the brain structure is going to make a hell of a difference in the personality and the symptoms. This is, of course, the side view, all the systems beautifully placed, the brainstem, the pons, medulla oblongata, cerebellum, and this corpus callosum, the talking part between the two cerebral hemispheres. Now this modality has been used for a number of years. So even if some acute thing happens, we have different filters, just like you will have in mobiles. We can see on T1, T2. These are different sequences. They show if the damage is early, a bit late, and referencing point, this CSF is black in here, it's white in here, and you can get flare sequence. It will show a better internal capsule. So this is some basics which we covered in the last conference, but today we will just pass. A lot of dementia patients turning up, we have to be very accurate. The brain have different speeds of slowing down. This circus keeps on increasing step by step. So patients, when they land to us, they are between moderate to severe dementia. We have to pick the patients right at this stage. So we have to familiarize ourselves with this radio imaging. Why are we doing this session? What motivated me? So when I was a young psychiatrist, I'm pretty young today, but when I joined as an assistant professor at Mayo Hospital building, I was told about this psychotic patient who was a prisoner and was about to be hanged. A black warrant was given. I wrote a report of 16 pages going through hundreds of documents, and all the psychiatrists had already seen that patient, but the court did not know about this. Now, if the court does not know, then what are we doing? So I got very motivated. I emailed to all the PPAs. They were very kind. They stood behind me. I wrote a number of appeals. The black warrant was taken back, and it will go and come back. And over the period of time, I also met Professor Malik at the Forensic Conference at the University of Health Sciences, and he introduced these terms. These are very catchy phrases about our behavioral problems, which we see so much: anger, hate, prejudice, greed, lustosis, lack of compassion,
And this really fascinated me because coming from a philosophical and scientific background, I was a bit skeptic first, initially. Then I thought, yes, to connect with the masses, this makes a very good speaker. People love our these terms and this succinct terms. So I kind of rolled with that for a while. And then coming to Ishq, he kind of used the stages in spiritual terms, shock, addiction to the beloved, intoxication, fana, baka. These are the spiritual lingos which we're a bit comfortable in the spiritual circles. But what did it actually mean? I had no idea at that time. And this motivated me later on that we have to find the circuit which is responsible for this, all the terminology. Where are the circuits? So I had the chance to come to the Institute of Psychiatry. We had a lecture on forensic psychiatry that was a very useful one for me for various reasons. Somehow there was a team. There was a lawyer from Lahore, Sara Bilal from Justice Project Pakistan, and there was an experienced psychiatrist who served as a mediator between the court, judges, and psychiatric point of view. And this is one of the trainings we did at Lahore High Court. The people used to come from abroad, and the judges were happy to listen to them somehow. This is one of our Napoleon coming from US. Interestingly, that day the lawyers were on strike, and the judges were a bit free for us. I had the opportunity to go to New York to go for this mental health workshop and to address the mental health laws. And a lot of countries had the similar problems going on over there. So it was also an eye-opening for me. The reason we are here today is that in 2016, Supreme Court said schizophrenia is not a mental disorder. So just 9 years back, the court did not even think that it's a mental disorder. A whole system went after 9-10 years, and we were able to reverse this, and the Supreme Court kind of accepted it's a mental disorder and was willing to change its views. This is the advocate which fought the case from Punjab government. It challenged the Supreme Court's judgment. I had the unique opportunity to sit with him, take my books, and create a scientific case. And that was the first time I felt it, because we take it for granted that psychosis is a dopaminergic issue. But when you have to convince a court, the judges were a skeptic, and we're looking at, and then they're looking at you, which illness? How would we know? So you have to give them the examples of 1800th century, the century where the first judge asked an asylum superintendent that, Mr. So-and-so, why should I listen to you that this person has a psychiatric disorder? And the guy said, because I work with these people, I know about them. He said, okay, then what punishment should I give? He said, no sir, I am your technical help, the judgment is yours. So here I felt that this is my failure if I have not been able to put the right scientific information to the judge. A lot of forensic psychiatrists came, they did their work. We lost these two giants, Dr. Harun Ahmed from Karachi and Professor Malik Hussain al-Bashir. We lost them, but the message is not lost. The war is still being on. I tried to write some articles, but as you know, this is nobody's interested in reading the articles. The change that I felt over the period of time has to come from within. There should not be a single psychiatrist who is reluctant to write medication. Although 90% of you, all are biological scientists. Nobody is not a biological scientist. But this is a war going on. A war between sociology, there's a war between psychology, and there's a war between biology. तो बायोलॉजी को हमने बिल्कुल ऐसे रख लिया जैसे यार वो तो सत्य है, सच है, उसको कोई डिफेंड करने की जरूरत नहीं है. But no sir, we are way behind just because of this lack of. The judges agreed that the science have to enter the court, and we are thankful for that. The report which came was called Safia Bano Report. It's a wonderful 55-page document. It tells beautifully why things should be done,
how should be done. But this is not the topic of our discussion. The topic is why there is fear of poor medicalization, why are we doing under-treatment, are the guidelines we are using right, who have given the authority to Mosley to tell how much antidepressants you have to write. अगर कोई अंग्रेज आएगा तो एक रोटी खा के उसका पेट भर जाता है और आप यहाँ लोकल कोई 4 रोटियाँ खा के उसका पेट भरता है. We have different genetic system, we have different enzyme system. The matter is that illness has to be removed, cured, prophylactically controlled. So we need to get out of these shackles, the shackles of classification system. DSM-5-3, our chairperson was there when the DSM-5-3 came. In 1980s, DSM-5-3 was coming. And they sat together and they said, these four terms are not really useful. Melancholia is not doing something. This other things are not doing. Let's create some new terms. Anxiety, depression. There were some psychoanalysts there. They said, okay, what? Anhedonia, alexithymia. All those psychoanalytical terms which don't really mean much in biological terms. So we will establish today that what does biological means? Why are we talking about anhedonia, alexithymia? What does it actually mean for a doctor? How we can talk about in the language of the neurons. If there is a patient of a liver or kidney, we never talk about liver cells, that is an autocrine cell, is talking about the autocrine cell, the paracrine cell. No, we talk about the liver system. We talk about its biomarkers. Is it the coagulation system is fine? Is the bleeding is happening or not? We have a lot of biomarkers. But in brain, we're always talking about neurotransmitters, this is going up. This is a talk of 1990s, 1980s, 70s. The world has gone much further. Where has it gone? So now we are talking about phenotypes, pathotypes, biotypes, genotypes. Genotypes are the code which cannot be seen with the eyes. It has to be tested. Biotype is the biomarkers which you can see, check through a lab. Pathotype is what is internally wrong. And the phenotype is what we can see as symptoms. Just read this line. So multiple genotypes combine to form a single pathotype. And the multiple pathotypes makes a single phenotype. What you are seeing has a lot of things going down the hood. And that we are going to find today. You all remember Eckes-Carl. Eckes-Carl was, he loved to make types of bipolar 1, 2, 3, 4, 5, 6. What was wrong with him? He was just looking at the bipolar. This person has mania, this is drug-induced mania, this is like bipolar 3, 4, 5. Actually, it's the brain excitability. The brain is hyper-excitable for some reason. Whatever causation he used to see, he used to think maybe it's another type, it's another type. This will be clarified today when we look at what is the damage. So this was the introductory part, just to establish why we are here. And now we are going to decode the codes which in few 30-40 minutes will clarify the cloud. I will go a bit with the speed. Just I want to highlight few things. I cannot make the slides very kind of pertinent and small because I wanted that I can give you a full spectrum as I'm seeing it at the moment. Why CNS was developed? It's an old story, and there was a unicellular. Everything was happening at the cell level. When you became multicellular, communication was required. A neuron was formed, and the neurons became tissues, organs, systems, and all nervous system. So neuron is there to create something called homeostasis, communication, restoration, regeneration. Brain is the master organ. Everything which is happening in the brain is coming from, in the body, is coming from the brain. You cannot discount brain. All the psychology, all the psychoanalysis, all the mind, it actually, the problem started with Descartes when he made the brain and the mind distinction. I have been a follower of philosophy, psychoanalysis for a number of years. But today I found that was detrimental for our science. As you know, when we become psychiatrists, a lot of people love humanities. Our chairperson is an author of a beautiful book, Jo Ji Mein Aaye. He writes poetry, he
He writes literature. So all is a literature group. They will read multiple books. That is very good. But when we have this psychiatrist hat, we have to look like a psychiatrist. We have to think like a biologist. We have to get out of the stories of psychology and sociology and psychoanalysis. That is thing of the past. Let's get out of that. Consciousness. A lot of things are written about consciousness, legal definitions, medical definitions. But this is what I found most pertinent. What is consciousness? Consciousness is a quantum computation going in the microtubules of the nerves, and it is all in a synchronized state. That synchronized activity in the neurons is which creates the consciousness. Very beautiful line. All the layers of the brain functioning in a very synchronized, dependable, predictable way. That creates consciousness. And when some damage happens, inflammation, infection, immunity problem, trauma, cancer, anything, their consciousness is disturbed. And the first stage is acute confusional state that we call delirium. But we have to get out of these terms and we have to think of the system as a complex network. Look and appreciate this beautiful thing. A neuron. It is a cell body, bronchs, axons. At each point, a fault can come. They can be a fault in its formation, its development, its connection, its talking. There could be a problem in the cell, its communication, its talking, its chemical, its all kind of balances can get upset very easily. A pregnant lady, she gets upset, she gets disease, there's hypertension, there's eclampsia. Any problem going and happening can create a problem to that zygote, to that fetus before birth. Problems can start right before the birth. Problems can be in the body, which we will call as vulnerability. If there is no vulnerability, you will not get the disease. There's always a vulnerability when a problem comes. And this is why we have created a new term called subjectivity. When we could not understand why this person has problem from, let's say, anything like work or marriage or some stressor, and then when we were unable to find if this person does not have it and this person has it, what is the difference? We came up with this term called subjectivity. Somebody is taking more stress, somebody is taking less stress. Both are right biologically. But biologically, we have to say this is an internal fault, something called vulnerability over here. So I won't need to go into detail, but you can appreciate the problems can come through mutations also. There could be damage and genetic material can mutate negatively. Maternal immune system epigenetics, fetal epigenome, all are open to a problem. When a problem comes, very simply, when a problem comes to the brain, initially brain increases its activity. अगर थोड़े लोग होंगे डॉक्टर्स, 4 डॉक्टर्स होंगे वार्ड में, ज़्यादा काम होगा तो ज़्यादा काम करना शुरू हो जाएंगे. थोड़े से के बाद चारों के चारों थकना शुरू हो जाएंगे. करते करते बिल्कुल बैठ जाएंगे. The brain is the same. Hyperexcitability, increased work, and then there is a destabilization, chronic destabilization, and then chronic destabilization. और 4 डॉक्टर थे और बड़ा काम आ गया, कॉन्फ्रेंस करानी पड़ गई. Acute destabilization, brain will go down. And this is what we call anxiety, depression, obsession, whatnot. And we'll see how it happens. This homeostasis is at every level. As an organism, we have to create a balance at cell level, tissue level, organ level, system level. All kinds of homeostasis is carried out by the brain in consultation with immune system and endocrine system. These are the 2 biggest helpers of the brain. We have seen about the liver. If liver has some problem, it can manage through growth factors, peripheral hormones, nutrients, inflammatory mediators. But in brain, we have hundreds of pacemakers. Heart has 1 pacemaker. There's a lot of human cry. The brain has a number of pacemakers. Some are in the basal ganglia, some are in prefrontal cortex. Hypothalamus is all about pacemakers. Everything is being controlled automatically. And then locus ceruleus, Portfinger complex,
and potentially fibers in the cerebellum. These all are factors which are automatically working. If there's a problem in one system, a combined result will be seen in the brain. Now, if you look at the big houses, brain में बड़े-बड़े 5 circuits हैं, which आप इसमें देखें तो thalamus and cingulate, which is cortex and thalamic system, amygdala and thalamus, cerebellum and thalamus, insula and hypothalamus. So brain में important areas which are 5 ही हैं. Frontal में cingulate is very important, insula is very important. We have cerebellum, which has an inhibitory role, basal ganglia, which has a certain motor control, and all the obsession and CST loops and all this is managed by the striatums. And then we have the limbic system, amygdala, all of us know. So whenever everything will happen, a circuit between them is going to be disturbed. When we call a vulnerability, these could be some very deep down mitochondrial issues, generopathies, this could be immune system problems. When a cell is damaged, if this is a cell and this internal coming, outgoing is fault, that is a generopathy. When the mitochondria, the respiratory system, the energy house of the cell is damaged, that is called mitochondrial problem. So in depression, the mitochondrial power goes from 40% to 20%. Only this one problem is enough to create depression. The person will have fatigue, low mood, even suicidal. So we have to think about depression in these terms. Now, the brain has, this whole system is about the life history of the brain. There is the energy houses, there's the structure, there's the chemicals, there's the support system. I won't go into detail, but you can appreciate that all these levels can be damaged by hundreds of conditions. Without biological vulnerability, a person cannot have an illness. Even we can get into cognitive overload. If you did not sleep yesterday, you can't go on for 2, 3, 4 days. If the number of days, weeks, cognitive load will increase and the brain will go down. If you take energy drinks, then you are in a simulatory world ready to have a breakdown. But those who have a vulnerability will have a quicker downfall. Those who have a vulnerability will be shot down by 1 cigarette of cannabis. Who does not have a vulnerability, he can have like 100 years of cannabis, he won't have any damage. What a wonderful picture showing all the excitatory movements happening in the brain. A lot of sciences have come now. Scientists are talking about biology, embryology, chemistry, all kind of genetics, lipidomics, and we are still stuck with jadoo, Rona, counseling, therapy, psychoanalysis. Even if you are a psychologist, aren't there some psychologists? So this is for you. We teach in our psychological department and we tell them, you have to be more good at biology. You have to understand what needs medication, has medication. Then you can help as much as you want. We have a portion for you also coming. So brain has a lot of functional layers. There is a center which is controlling the moral layer. There is a center controlling the emotional part. The moral part is the cingulate cortex. There is a center for emotions, guilt. There is a center for the interpersonal dilemmas, severe temporal gyrus. So whatever you're doing, some part of the brain is highlighted. Some part is doing some work. This cannot happen कि आप कुछ कर रहे हैं और ब्रेन में उसका कोई हिस्सा नहीं है. ये नहीं हो सकता. अब यहाँ नीचे से ऊपर आए हैं 4-5 ही रास्ते होंगे. कुछ मेन रास्ते होंगे, कुछ कम जाने वाले रास्ते होंगे. जहाँ भी प्रॉब्लम आएगा, there will be a problem, and we have to find that problem. All the brain can be divided into these major systems: cortical, subcortical, thalamus, midbrain, autonomic system, peripheral nervous system. So when you see a patient, you can guess what system is at fault, and then you can take a relevant history, you can ask certain questions, and you can find, is it a cortical problem, is it a brainstem problem, is it some autonomic system. The symptoms can also be divided into different systems. When you see a patient, you can divide very simply in those classifications which we have made for the conversion disorder. For all the years I studied, there was a conversion disorder. ये वो
डिपार्टमेंट है जहाँ पे मेडिकेशन की बजाय बातों से ठीक करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि सबको सब एंटी डिप्रेसेंट्स वैसे ही दे देते थे, इसलिए आपको हम बातों से इलाज करेंगे, लेकिन एंटी डिप्रेसेंट्स वैसे ही देते थे, तो आए को भी दे दें। एंटी डिप्रेसेंट्स यूज्ड टू वर्क, बेंजोडाइजिपिन यूज्ड टू वर्क, और कहते बातों से ठीक होगा, नहीं भाई ऐसे नहीं होता। Bipolar disorder has a new name now. It's the biological disorder. It's a problem in the insula. It's a problem in the dissociation areas. It's the problem in the association areas. It's the problem in the depersonalization, collaborating brain areas. I will show you the slides which will tell. Okay, this might have been a bit complicated slides. थोड़ा सा इसको डाउन करते हैं. Brain is like a car. So engine है, ड्राइवर है, एक्सीलेटर है, ब्रेक. कभी एक्सीलेटर तेज हो जाएगा किसी में, इंपल्सिविटी प्रॉब्लम, एडिक्शन प्रॉब्लम्स, कभी ब्रेक तेज हो जाएगी, ऑब्सेशंस, इनहिबिशंस, कभी इंजन कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, कभी ड्राइवर को कोई मसला होगा. All these areas we can understand. It's a very interesting definition. And my favorite is amygdala. Amygdala is the sensor system. What happens is hypervigilance comes. When you're checking for everything, you become an emotional hell for the other person. The other important word is an autobiographical network. We all have autobiographical network, the midline cortical neurons, that is always thinking about himself, itself. And that is a major part from which delusions come. Whenever we are thinking too much, that part thinks too much, and it's about your own self and the other, very basic system. And this is the most dangerous system. अगर एक जगह खराबी होगी तो एक सिम्टम आएगा, एंड जब पूरे ब्रेन के बीच में जो कॉर्टिकल न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं, वहां खराबी आ जाएगी, तो देयर विल बी डिल्यूजन. ऑल द ग्लोबल नेटवर्क विल बी डाउन. So we have to be vigilant at what topic we are talking about. If the car is an allergy, अब ये प्रॉब्लम्स अगर आ गई हैं, ब्रेक खराब हो गई है, एक्सीलेटर बढ़ गया, तो हम दवाइयों में कैसे क्या करें? हम ड्राइवर को तेज कर सकते हैं स्टिमुलेंट से. We can put down the engine through naltrexone, a beautiful medication, naltrexone. Unfortunately, यहाँ पे सिर्फ ब्लैक में मिलती है. अगर ये हमारे पास हो, all the engines can be dampened down through naltrexone. Acceleration, हम सिर्फ एक्सपर्ट हैं एक्सलेशन कम करने के. एंटीसाइकोटिक्स, एंटीडिप्रेसेंट्स, एंटीएपिलेप्टिक्स, सब काम इसी से चल रहा है. हम एक ही सिस्टम पे काम कर रहे हैं, डाउनिंग द एक्सेलरेशन. अब हमारे पास ये RTMS वगैरह आना शुरू हो गए. It helps the cerebellum to control the control system of the brain. Now, just remember these terms, a very nice system. Antipsychotics now has to put down the sensory system. All the amygdala, all this emotional everything. It's a beautiful drug. जो हम ट्रेनिंग कर रहे थे, तो हमें पढ़ाते थे एंटीसाइकोटिक नहीं देना, only antidepressant. खुद हम देते थे प्रोफेसर साहब की एंटीसाइकोटिक भी चल रही. This has to change. That was the right approach, but they did not have this biological argument to why they are giving it. This is the biological argument. They have to be given. Only antipsychotic can put down that initial acute destabilization. And if you change your practice in this way, you don't need to start antidepressants right away. Patient depressed होकर आते हैं, antidepressant लेते हैं, it gets more active, and there's a problem. Give them acute destabilizer. Give them some time, let them settle. And after 1, 2, 3 weeks, when things are settled down, then you can increase the antipsychotics. And you must have seen this with panic patients. Panic आता है, उधर से भागता है, दूसरे के पास, दूसरे भी antidepressant दिया, तीसरे के पास. And it's not like acute destabilization. Don't listen to the guidelines. They are not taught in the biological terms. And this is all reference-based. मैंने खुद भी बनाया बैठ के. There are very interesting research papers which I can give you access to this slide, and you can read it yourself. ये मैं उसको आसान बनाने के लिए इस तरह लिखा हूँ. बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे एड्रेसेस हैं. एक जीन अगर खराब हो जाए, all the psychiatric issues can come from obsession, paranoia, psychosis, limbic system problem. कुछ जीन ऐसे हैं जिनके बारे में इतना ज्यादा पता है जितना इस जीन के बारे में पता है. इसके बारे में आप पढ़िए, CA-NA1C. An easy tip for today's talk. I will talk about certain traits. I'm not into the disorders. I will tell you every brain has a certain trait
a certain quality of the brain. Maybe this one person has inattention trait, other person might have an obsessive trait, one person has some other impulsive, because brain areas have to be collaborated. जो trait खराब होगी वैसी symptoms आएंगे, and you can only control the symptoms. Just listen to this beautiful line: all the disorders are just the symptoms of the brain. There is no true depression, anxiety, OCD, no sir. These are all the symptoms. अगर आप physician होते तो हम कहते हैं fever disorder, vomiting disorder, diarrhea disorder. That does not make a difference. What we are doing today is we are trying to find a philosophy, a scientific-based philosophy, which cuts through all the disorders, but with some biological sense. And the word for it is trans-diagnostic approach. जब भी classification system बनाते हैं, वो classifications कर देते हैं. ये औरतें हैं, ये बंदे हैं, ये third है, ये fourth, ये five. These categories are not like this. Nobody is truly something. Nobody is truly something. We have to go through trans-diagnostic. And the medical people are already doing that. There is a division called respiratory system, GIT, CNS, but it's not actually true. The true division would be inflammation. All the body will have inflammation, all the body will have immune system problem, all the body will have a cancer problem, all the body will have certain problem. So if we start thinking like this, your practice will become so beautiful. It will make so much sense. Okay, so talking about inattention. So if there is an inattention so much and there is no obsessive compensatory system, we will label it as bipolar. अगर उसके अंदर थोड़ी सी obsession होगी, उसका जो manic उधर नहीं जाएगा, उसको bipolar 2 कह देते हैं. तो इस तरह हर disorder का जो साफ्ट है वो change हो जाएगी जब आप इस तरह सोचेंगे. Inattention trait में there is always a hypervigilance, which is very important. And if we talk about circuits, so whenever somebody is hypervigilant, automatically मैं आपको स्टेप बता देता हूँ हर स्लाइड का कि जब भी कोई स्लाइड आएगी, अगर उसमें दिमाग नहीं लग रहा तो दैट इज अ फेलियर ऑफ एग्जेक्टिव सेंटर. अगर वो हरकत ज्यादा कर रहा है, इंपल्सिव कर रहा है, भाग रहा है, तेज कर रहा है, इज बीइंग पुश्ड बाय द इमोशनल सेंटर्स. और कोई और शादत हो रही है कहीं पे साइकिल और कहीं पे चले गए हो. 4-5 सर्किट्स में हमने खेलना है. And you can see with this step how we can decode different centers. So this problem is about, okay, so brain inattention and sleep. So whenever there is sleep problem, you have seen attention gets disturbed. Sleep has this all respirative, energy conservation and immune problem. Down the line, this is the sleep network. तो स्लीप में क्या होता है कि कभी सिस्टम हाइपर एक्साइटेबिलिटी में चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है. इसको कहते हैं फ्लिप फ्लॉप सिस्टम. दिस सर्किट हैज टू बी रिस्ट्रेन्ड. So if a patient comes, you can give them some sleeping drugs. Another problem which we saw was a big hype about benzodiazepine. If benzodiazepine are देंगे ये हो जाएगा, dementia हो जाएगा, फना. True, but if you take without supervision for a number of years, for a short time you have to give them. When the brain is hyperexcitable, heroin, opium was world's best medication for a number of years. Cannabis was one of the best medication for a number of years. All these drugs, Nareem साहब कहते थे कि अगर अफीम वेस्ट में पैदा होती तो अभी आप $100 के लेकर खरीद रहे होते, क्योंकि यहाँ पैदा हो रही है, आप खा रहे हैं. Wonderful results, but we have been trained to become biased. जो आपने क्या आपने जेनेटिक्स खाई है वो दबा कर दिया. साइकोलॉजिस्ट ने लिखी है वेरी बैड, फादर ने लिखी है बहुत ही बुरी बात. ऐसे मत सोचें. These medications are life givers. If you manage them without biases, these जो आपको जेनेटिक्स से आराम आएगा और किसी चीज से नहीं आएगा. शुरू में आप लें benzodiazepines, stabilize करें, acute stabilization से बाहर लाएं, then you can build the system. The system can be built through antidepressants. The system हमेशा antidepressants से बनेगा. No other choice. Antidepressant, like the other patients, is a fertilizer. And we will show you how the fertilizer works. Okay, so we have this flip-flop system and insulosingular network. Let's move on. अब हर पेशेंट जो आ रहा है उसके अंदर 4
अंदर जीनोटाइप छुपा हुआ है. We are trying to find those genotype. This is the latest trend, and to find endophenotype. Endophenotype is that thing which you can test in the laboratory. अगर कोई ज्यादा नमक खाएगा, उसका सिस्टम problematic हो जाएगा. They found कि ज्यादा नमक कौन खाते हैं? They have a certain brain disorder. They have linked with that. इस तरह के छोटे-छोटे बहुत सारी चीजें हम देखते हैं. This is a beautiful slide called pathways. अब कोई serotonin की बात नहीं कर रहा. अगर कोई dopamine की बात कर रहा है तो वो 1960 में जिंदा है, 70 में जिंदा है. हमारे पास जबरदस्त साइंटिस्ट बैठे हैं, अफरीदी साहब. अब दुनिया सिर्फ pathways की बात कर रही है. कहते हैं ये pathway, नॉश pathway, synaptic transcription, MAP, hedgehog. ये sonic कार्टून आपने सुना होगा, sonic hedgehog. ये सारे pathways क्या हैं? ये immune system, inflammation system, neuron growth system, cancer stopping system. These are all the pathways. So when I use the term pathway now, I'm going to talk about these pathways. So just look at this. If a patient comes of intellectual disability, we should find the pathway which is wrong and can we help the patient. But all we're doing is labeling. ये autism हो गया, देख के autism हो गया, देख के learning disability हो गया. भाई इसको investigate करें, try करें. कौन से रिवर्सिबल कॉजेज हैं न्यूट्रिशनल जो आप कर सकते हैं चेंज? सब कुछ नहीं कर सकते. देयर आर वेरी फ्यू कॉजेज. बट जैसे हम डिमेंशिया में चेक करते हैं रिवर्सिबल डिमेंशिया, वी हैव टू चेक दोज लर्निंग डिसेबिलिटीज व्हिच कैन हैव अ रिवर्सिबल प्रॉब्लम. वी विल हैव टू गियर अप आवरसेल्व्स, वी विल हैव टू फाइंड दोज टेस्ट कहाँ होते हैं, कितने पैसों के होते हैं. ये सब कुछ हो रहा है. बट somebody else is making money. There is a big autism network. पेशेंट आते हैं कि लाखों रुपए के टेस्ट हो गए, सब कुछ फायदा. आगे क्या हुआ? आगे कुछ भी नहीं हुआ. आगे आप बताएं. आप वही बताएंगे जो आपके पास वही है, जो सिस्टम है. बट वी हैव टू गेट दिस नेटवर्क करेक्टेड. आप बोलते स्टेम सेल्स, जो भी बात आती है उसमें स्टेम सेल्स डाल देते हैं. देयर इज नो एविडेंस फॉर स्टेम सेल्स इन दैट वे. हर चीज का इलाज, ये सारा सिस्टम स्टेम सेल्स से नहीं हो सकता. भी फ्यूचर में देखते हैं. ओके, सो जस्ट फॉर योर ओरिएंटेशन, दीज आर द सिस्टम्स. दिस इज हाउ दे आर रिलेटेड. Brain switch off. Brain switch off हो. For any reason, अगर आपका excitability कम हो गई है, GABA कम हो गया, excitability बढ़ जाएगी. GABA बढ़ गया, excitability कम हो जाएगी. Glutamate बढ़ गया, excitability बढ़ जाएगी. Glutamate कम हो गया, कम हो जाएगी. ठीक है? जो schizophrenia है, आपने पता है आपको सिगरेट क्यों पीते हैं? Because there is a nicotinic activation reduce at the reticular system. उसकी एक्टिवेशन ही कम हो गई है. तो सिगरेट पीते हैं तो हल्का सा उसको सोचने की सलाहियत आती है. जब दूसरा सिगरेट पीता है तो थोड़ा सा उसका क्लाउड हटता है. तो these are the biological targets which are in all the time. Delusion and hallucination. Now all of you are experts, but look at delusion from a new angle. Hallucination can only come if there is a delusion. एक बड़ी खूबसूरत किताब है बायोलॉजी की, कॉल्ड हैलुसिनेशन. उसमें बड़ी खूबसूरत बातें की हैं उसमें. हमें तो बहुत ही जिंदगी से पढ़ाया गया था. एंडरसन साहब ने जो बताया मैंने पढ़ लिया. बड़ी बड़ी बहसें भी कर ली, लड़ाइयाँ भी कर ली. लेकिन दिस इज डिफरेंट वर्ल्ड. डिल्यूजन होगा तो हैलुसिनेशन होगी, वरना हैलुसिनेशन नहीं होगी. जब सिस्टम इतना खराब होगा तो आप एक नई आवाज को हैलुसिनेशन समझेंगे. अदरवाइज तो आप कहेंगे कि ये आवाज आ रही है, ये खराबी है, फिर आप कानों में को चेक करेंगे. ठीक है? सो डिल्यूजन को आप भी देखें. डिल्यूजन क्यों होती है? बिकॉज वी आर पुटिंग एन एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस ऑन वन स्टफ, एक्सट्रीम वेलेंस. वो जो एक चीज माइंड में फंस जाती है, दैट इज दोस कॉर्टिकल न्यूरॉन्स इन द ब्रेन which are called self-referential neurons, autobiographical neurons. They are at fault. Delusion and hallucination disturbs all these networks: learning, memory, executive function, attention, vigilance, and the self. यही 5 पूरी ब्रेन की दास्तान सुनाते हैं. Hallucination की बड़ी खूबसूरत definition है. Hallucination will happen whenever there is excessive mental imagery is coupled with decreased frontal and increased hypervigilance. वो जो हमने imagery पढ़ी थी, perceptual disturbance, इससे कोई फायदा नहीं हुआ. Imagery है नहीं है नहीं. But this is the biological definition. Several functions are going to low. The innate system, sensory systems are increased, and there is hypervigilance, decreased sleep. All this combined can create hallucination. Alcohol में hallucination हो जाता है because alcohol also disturbs the
brain function for some amount of time. Sleep deprivation, नींद आप नहीं सोए, you have hallucinations, you can have slight delusions. अगर आप थोड़ा सा चर्च का सिगरेट भी है, जिसमें vulnerability होगी, उसमें पहले सिगरेट से भी सेट, उसमें जंप आते हैं. जिसमें नहीं होगी वो माशाल्लाह सेट है. बहुत सारे मेरे मरीज जब सब फेल हो जाते हैं, neurologist को भी भेज दिया, ब्लड ठीक नहीं हो रहा, स्ट्रेस है, हस्बैंड ठीक नहीं, फला सब बैठ के मस्त है. कैनाबिस भी है, दूसरे दिन भी depression. Amazing inflammation, anti-inflammation response, amazing relaxation response. जब सब दवाइयाँ फेल हो गई हैं, we have all these tools, we can use it, and you should also try to use it. Okay, so we're going further with this. There would be a glial cell hyperexcitability, which is the help of the neuron. We have ये बात हो गई है. Okay, let's move to some new topic. Schopenhauer, एक बड़ा pessimistic philosopher था, वो कहता था कि whatever we are trying to make sense is out of nonsense and undifferentiated words से हम create कर रहे हैं. Okay, that's fine, but we have a choice. Kant आया तो Kant ने, Immanuel Kant ने उसमें भी categories बना दी, लेकिन we have a choice. We can jump from the non-biological to the biological. तो psychologist को सारी biology पढ़ाई जाती है, अगर वो simply ये follow कर लें कि यार brain तो अपनी चीज है, तो खराब हो सकती है. और अब हमने देखा है ट्रेंड, they are giving antidepressants. Why is that? Because they believe in the power of the medication. I'm happy with that. I would like they should have the right spend some time if we train them, right? And I've seen the psychiatrists who are training psychology. That's all right. It's your choice. But let's focus on the biology first, because the biology is our primary problem. तो अगर psychologist का काम हमने पकड़ना है, तो फिर उन्हें हमारा काम पकड़ना है, फिर तो फिर अदला बदला होगा. That's fine. Makes sense. पैसे की दौड़ है, पैसे की दौड़ है, कोई किसी के पीछे. So we have to become scientists. We have to create our boundary and move what we know. Nietzsche, जिससे आपने बहुत impress होकर उन्होंने बुद्धि का concept लिया, overmatch के concept से, वो कहा करता था कि existence of forgetting has never been proved. Only some things don't come to mind when we want them. उस जमाने के हिसाब से ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती है, but now we have so many things which have already come, and this is the masterpiece which came a few years back. Why is it masterpiece? It has created a system. We are seeing the patient which is here, their syndromes. Patient come with a disorder, जो नाम लेते हैं bipolar, psychosis, ये सारा कुछ. ये है symptoms of the brain. और इसके नीचे cognitive phenotypes है. जब आप cognition चेक करते हैं तो उसमें different cognition phenotypes होती हैं. वो कौन सी होती हैं? Somebody has an obsession, somebody has some impulsion, somebody has some other kind of fixation, somebody thinks less. ये सब जो brain के functions हैं, ये cognitive में आते हैं. तो आप हर patient में different cognition चेक कर सकते हैं. इनके नीचे ये हमारा आज का जो मकसद था कि इसके नीचे मैं बताऊं कि ये 5 ग्रुप्स, connectome, सेल से साइटोम, प्रोटीन से प्रोटियोम, ट्रांसक्रिप्टोम, जीनोम, ये वो बायोलॉजिकल टर्म्स हैं जो हमने बचपन में याद की थी, फिर भूल गए. अब इससे बहुत काम हो रहा है. अब सारी दवाइयाँ इसी लेवल पे काम करेंगी, या जीन को ठीक करेंगी या मॉडिफाई करेंगी. तो इट्स द राइट टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग एंड टॉकिंग अबाउट दिस. इम्पल्सिविटी, कंपल्सिविटी, वेरी कैची फ्रेज दिस डेज. हर बीमारी में इम्पल्सिविटी है या कंपल्सिविटी, या आप रोक नहीं सकते या फिर कर करके रोक नहीं सकते. तो इंसान का बुनियादी मसला यही है, यही हमारा मेन इशू है. बट इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स व्हेन यू टॉक अबाउट बायोलॉजिकल, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ सर्किट्स, ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, सिंगलेट कॉर्टेक्स. एंटीसिपेटरी कंट्रोल इज कॉज्ड. आई लव दिस स्टेटमेंट. जो भी एकदम से फैसले कर रहे होते हैं वो पहले से हिसाब किताब नहीं सिर्फ कर सके होते. तो हम जब दूसरों को मशवरे दे रहे होते हैं कि यार तू तो सोचता ही नहीं है, तू ये कर लिया, तो ये उसका ब्रेन ही ऐसा है. किसी का ब्रेन चेंज नहीं हो सकता, सिर्फ वो अपना ब्रेन अपने आप को जान सकता है, उसके हिसाब से उसकी ट्रेनिंग या मेडिकेशन या जो ठीक हो सकती है. सिस्टम इज सेट. जो मोबाइल आपके पास है आप उससे दूसरा काम नहीं कर सकते दूसरे के मोबाइल में. आईफोन वाला एंड्रॉइड वाले काम नहीं कर सकता, एंड्रॉइड वाला आईफोन वाला नहीं कर सकता. दिस इज व्हाट वी हैव टू नो. मोबाइल इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ जेनेटिक्स. सब सिस्टम उसमें लेयर्ड है, जो उसमें कोडेड है वही हो सकता है. कुछ चीजें आप उसमें चेंज कर सकते हैं, बिकॉज ब्रेन इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड ब्रेन मशीन.
We aren't just a machine. And in the next lecture tomorrow we'll discuss how evolution has helped us, is for the good or the bad. Okay, so impulsivity has a problem. In the reward centers, the motivational centers, you're firing up towards an action. And there's a decrease in the thinking center, which we'll call as an executive center. So if you want to sound more academic, you can use these terms. You can make an impression in your lectures. If there is an impulsivity, we are giving all kind of medication, antipsychotics, mood stabilizers. These are all actually suppressing the system and maintaining them. Some of the things are making the system more stronger, this antidepressants. I'll just skip those things which I've talked about. ये ट्रीटमेंट होने के लिए इम्पोर्टेंट है कि यू कैन increase the anticipatory control system through stimulants. तो जो ADHD टाइप के होते हैं लोग जिसका inattention trait है, stimulants are wonderful, especially methylphenidate. Lovely, it controls, helps the learning process as well. इसके ऊपर जब आप पढ़ें तो anticipation के हिसाब से देखिए. All right, we've talked enough about impulsivity. We'll go a little further. Genetics. Brain has about 20,000 genes, which is just 1.5% of the genetic material. बाकी सारा supporting system है, 80, 90, 95%. And that system, study of that system is called epigenetics. तो अगर किसी में genes आ गई हैं, उसका support system and that will determine which traits it will show, which it will not show. ये सारा system बहुत जरूरी है genes के. इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और जितने हमने stages हैं इसको रेगुलोम भी कहते हैं, जो रेगुलेटरी जीन्स हैं, रेगुलोम जीन्स को कह देते हैं जीनोम. तो ये ओम सब डाल जाते हैं. A beautiful picture of the cell. We all are actually trillions of cells. There are 30 trillion cells. लेकिन एक सेल को समझेंगे तो सारा सिस्टम समझ आ जाएगा. एक सेल भी समझ आ जाएगी कि बाहर प्रॉब्लम हो रही है तो चैनोपैथी है, माइटोकॉन्ड्रियल है तो माइटोकॉन्ड्रियल प्रॉब्लम. अगर नर्व अंदर जाके आरएनए का प्रॉब्लम है, एन आरएनए इशू. यही प्रॉब्लम्स हैं जो हमें आइडेंटिफाई करने हैं. And there are tests यहाँ पे ऐसे बढ़ते जाने हैं ऐसे एंटी कैंसर मेडिकेशन और स्टॉपिंग दिस सिस्टम वो कैंसर के किसी सिस्टम को रोक के आगे लेके जाती है. A beautiful slide on mania. What are the defects at the cellular level? वो हाइपर एक्साइटेबिलिटी कैसे हो रही है? सेल को क्या मसला हुआ है? डेंड्रिटिक आर्टराइजेशन ठीक नहीं, प्रूनिंग ठीक नहीं, एक्टिवेशन जल्दी हो गई, माइक्रोग्लिया एक्टिवेट हो गया. तो सेल के भी सारे पार्ट्स एक्टिवेट हो गए हैं और रोकने वाले डीएक्टिवेट हो गए. इट्स एक्चुअली द सेल. मतलब अगर कोई हाइपर एक्साइटेबल हो गया है तो उसके अगर आप सेल पे गए हैं तो सेल में भी जो हिस्से उसके एक्साइट करने वाले हैं वो बढ़ गए हैं. आसान सी बात है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं. और उसको रोकने वाले को वो रोके हैं. दिस इज हाउ यू कैन मेक दिस कॉन्सेप्ट क्लियर. एंड इफ यू वांट टू टॉक अबाउट पाथवेज, वो सारे पाथवेज जिनका मैं नाम लिखा था वो सारे बढ़ जाते हैं. mTOR pathway is a growth pathway, toll-like, JAK. These some pathways, either they are immune system pathway or inflammatory pathway or the growth. तीन से आगे कोई बात नहीं होगी. आपको ये तीन लफ्ज आप याद आज कर लें, immune, inflammation and the growth. जिसमें ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी कैंसर कह देंगे उसको, कम हो जाएगी रिटार्डेशन कह देंगे उसको, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी. ऑटो यहाँ पे ज्यादा बैठी है, ऑटो के अंदर ब्रेन में सिस्टम का मसला होगा हमेशा. सारी बीमारियां पे देखें ऑटो में 9 दफा औरतों को होती है, एक बंदे को होता है. बंदों को ज्यादा कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम होंगे. बंदों को 10 को हार्ट अटैक होगा तो एक औरत को हार्ट अटैक होगा, वो भी शायद नहीं होगा. फिर ऐसा नहीं है. ठीक है. सो इट्स अ जनरलाइजेशन. आई एम टेलिंग अबाउट द फैक्ट्स. वी कैन टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन. श्योर. So why is this division? There's a vulnerability factor. Women have a protective system and men have another system which is a risk factor for them. Antidepressants, when you're giving antidepressants, what is it actually doing? तो आप कहते हैं antidepressant में किया क्या है? उसने ये pathways, ये सारे pathways stabilize किए हैं, जो skeleton को help कर रहे हैं, BDNF को बढ़ा रहे हैं. BDNF क्या है? BDNF is the fertilizer, brain drive neurotrophic factor. जब आप दवाई देंगे तो फैक्टर बढ़ेगा तो सेल्स मजबूत होंगे. कोई ऐसा पेशेंट नहीं जिसको एंटीडिप्रेसेंट से नुकसान होगा. सबसे बड़ी चीज पिछले साल में पता चला है कि बाइपोलर्स को भी एंटीडिप्रेसेंट्स लंबा अरसा दी भी जा सकती हैं, देनी भी चाहिए.
only a small time. जब नया नया खाने का आप रोकते हैं, there's a time when the brain is still hyperexcitable. उस टाइम पे आपको एंटीडिप्रेसेंट्स के साथ जरूरी मूड स्टेबलाइजर्स. But once 2-3 months goes away, there's a time you can give antidepressants. अगर किसी में हो propensity तो आप उसको चेंज कर सकते हैं. लेकिन आपने देखा 15-20 साल हमने एंटीडिप्रेसेंट्स देते थे सिर्फ 3 महीने. 3 महीने बाद हम बंद करते हैं. गाइडलाइंस इज नथिंग. दिस इज अ न्यू रिसर्च, साइंटिफिक प्रूफ. Give antidepressants, make those brains more strong in the future. All right, let's go further. So brains, antidepressants क्या कर रही हैं? They are stabilizing all the systems which we discussed: immunity, inflammation, and the growth factor. BDNF दो काम करती है. सेंट्रल. अगर किसी में BDNF बढ़ा हुआ तो उसके दो मतलब होते हैं. या तो उसके अंदर मेटाबॉलिक डिमांड बढ़ चुकी है, या उसका सिक्रेशन किसी वजह से हो रहा है. ऑलराइट, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं. शेफ्रॉन प्रोटीन का मतलब है वो प्रोटीन जो सेल के अंदर दूसरी चीजों को हाथ पकड़ के लेके आते हैं. अगर ये खराब हो जाए तो देयर आर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स व्हिच लीड्स टू डिमेंशिया. डिमेंशिया, ऑल टाइप्स आर बेसिकली मिसफोल्डिंग प्रोटीन प्रॉब्लम. फ्लोबिनापैथी और ये सारी चीजें आप कह रहे हैं, वो एक सेल की एक मूवमेंट का एक प्रॉब्लम है बेसिकली. तो प्रोटीन की क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्रिएशन भी इंपॉर्टेंट है. जब आप एंटीबायोटिक्स देते थे तो एंटीबायोटिक्स में न्यूरो प्रोग्रेशन रोकने की ताकत है. उतनी नहीं है कि वो साइकोसिस को रोक सके, बिकॉज साइकोसिस का प्रॉब्लम बचपन से शुरू हो चुका होता है. इसका इस टाइप का मकसद ये था कि एंटीबायोटिक्स में भी ये पावर है कि वो थोड़ा साइकोसिस को रोके, लेकिन बहुत थोड़ी है. एंटीडिप्रेसेंट्स में भी ये पावर है कि वो इम्यूनिटी को ठीक करे, उसको कैंसर को रोके. कैंसर को वैसे भी रोकेगा जैसे हम एंटी कैंसर से रोकेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऑल मेडिकेशन हैव दिस एंटी कैंसर इफेक्ट. ऑल दी एंटी डायबिटिक्स कुछ ऐसे होंगे जिसमें मूड स्टेबलाइजिंग इफेक्ट होगा. तो जैसे वो डायबिटीज भी है तो उसका मूड भी खराब है. अगर आप कैल्शियम चैनल देंगे एंटी हाइपरटेंसिव, दैट विल हैव अ बेटर इफेक्ट ऑन हिज मूड. तो हम बाकी दवाइयों से भी फायदा उठा सकते हैं इफ वी सीक इट फ्रॉम ब्रेन हॉर्मोन्स. सो GLP-1, it can help just like a lithium. It's like a 30% lithium effect if you give it to one. पेशेंट हमारे पास कैसे आता है? 7 दिनों से गुजर के आता है. जब हमारे पास आए तो उसको दवाई जरूर दें, बिकॉज द सिस्टम will not allow it to come back. Irritable bowel syndrome. All antipsychotics are also stabilizing the systems. Most disorders are polygenic. इसका NCD होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. तमाम डिजीजेस आर मोस्टली पॉलीजेनिक. एक ही चीज बहुत मुश्किल से मिलती है. तो दैट्स फाइन. कोई सी बात. ये वो बुक है जिसमें मैं जिक्र कर रहा था, एंडोफिनोटाइप के ऊपर. इसमें हम चीजें देख सकते हैं. और दिस इज द न्यू फैशन, omics. Everything is now going to be called omics. Genomics, transcriptomics, proteomics, phenomics. इसको आपने देखना है. Obfuscation means confusion. We have to remove the confusion of the disorders through biological hilarity. जब psychosis होता है तो there are a lot of combinations. हमेशा combinations में cognition, obsession, vigilance, इनके combinations होंगे. किसी में ज्यादा होंगे, किसी में कम होंगे. 3-4 से ज्यादा कोई चीज नहीं है. और सारी बीमारियां इसी तरह अगर आप डाउन करें, रिडक्शनिस्ट यूज करें तो इसके बायोलॉजिकल टारगेट्स ही शो कर रहे हैं. तो जहां पे OCS होगा दैट्स फाइन. किसी को हमने क्लस्टर C कह दिया, क्लस्टर B कह दिए. पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स कभी निकाल देते हैं DSM वाले, कभी ले आते हैं. लेकिन ट्रू सेंस होगा फ्यूचर में दैट विल बी ट्रेट्स, इनअटेंशन ट्रेट, ऑब्सेसिव ट्रेट, इम्पल्सिविटी ट्रेट. और जिसमें जो ट्रेट होगा उसके हिसाब से पता चलेगा कि उसका कैसा प्रोग्नोसिस है. This is a beautiful slide telling about rumination, a phobic, misery avoiding phenotype. Those people who are always avoiding.
is a type of self-referential memory. ये कैसे नजर आती है? तो कई दफा कुछ पेशेंट्स में कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं कि रेपिटेटिव थॉट्स आ रही हैं, पॉज हो रही हैं, कुछ में ट्रिगर हो रही हैं, कुछ में रोक दी just because of the biological thought. Whenever you control the system, stability will come at the price of versatility. और versatility होगी तो stability थोड़ी सी कम होगी. तो ये सीसॉ चलता रहेगा. कहीं पे कंट्रोल आपने कर देना है, कहीं पे छोड़ देना है. ये बिल्कुल बेसिक बात है इसमें, लेकिन आपने पेशेंट के हिसाब से इसको चेंज करना होता है. ये empathy पास रहेगा. So हर पेशेंट में look at for these 5 symptoms: cognition, motor, sensory, somatic, and a behavioral problem. ये वही है बातें जो हम कन्वर्जन में देख रहे थे, मोटर, सेंसरी, नेक्स्ट एंड ऑटोनॉमिक. वही चीजें ब्रेन की बात है. ब्रेन का हर बिहेवियर एक्चुअली इक्विवेलेंट ऑफ एपिलेप्टिक फिट होता है. जो बिहेवियर है दैट इज जस्ट लाइक अ फिट. अगर आप बिहेवियर को एक्सप्रेशन ऑफ द ब्रेन समझेंगे, देन यू कैन थिंक इन दिस लाइन. अगर आप बिहेवियर को बिहेवियर समझ लेंगे, फिर आप उसी के साथ चल पड़ेंगे. तो बहुत जगहों पे आपको ये हेल्प करती है. ठीक है. So सर्टेलिन आपने दी, कैसे डिप्रेशन ठीक की उसने, बिकॉज इट इम्प्रूव्स द स्ट्रेस सेलुलर कैपेसिटी ऑफ दैट काइंड ऑफ सेल इन द सिस्टम. एवरीथिंग जब हम स्ट्रेस इसको बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली द सेल स्ट्रेस. सेल का जो स्ट्रेस है वो आपने बेहतर किया थ्रू BDNF, ऑल द पाथवेज. तो जो आम स्ट्रेस का लफ्ज होता है, इसका नाम चेंज होना चाहिए. पूरा कोई स्ट्रेस को उतना हम रिपीट कर चुके हैं. बायोलॉजिकल स्ट्रेस एंड एक्चुअल जो है स्ट्रेस है, उसमें डिफरेंशिएशन नहीं होती. तो आई डोंट यूज द वर्ड स्ट्रेस, आई यूज द टर्म एलोस्टेसिस. Allostasis is the biological component on the body. So think in terms of allostasis now. Liver की बात हमने कर ली, हम आगे चलते हैं. And we talk about this is an interesting slide. This is a cognitive trait. जब आप cognitive trait करते हैं बात, lateral thinking, जो आजाद ख्याल, liberal, out of the box thinking, that is a trait. There will be some who will always ruminate. There will be some which will always be motivating others. The brain's best intelligence point is the pattern recognition. What we are doing today is a collective pattern recognition. ये patterns अगर आपने देखे हैं तो think about it, see the research, connect, and get out of the old system which we were taught. Then there is intellectual expression, reaction towards something happening. So Professor Hashmi का जो होगा emotional trait, that will be much different from Dr. Shankar. Dr. Shankar का जो trait होगा, that will be much different from Dr. Junaid. और जुनैद का forensic trait ज़्यादा होगा. Forensic trait को जब हम study करेंगे, पता चलेगा कि हर issue में एक dilemma ढूंढ लेते हैं. और वो dilemma ढूंढना एक trait है. Temporal guidance. ये उसमें सोचना है कि ये ठीक है, ये गलत है. Cingulate guidance. Cingulate guidance हम देखना है कि moral इसकी layer क्या है, एक नंबर functional में check की थी. तो ये everything is because of the brain issue. There is a brain area that is either hyperstimulated, low stimulated. Some will be more rigid, some will be more flexible. इसमें आप लोगों को कमाल नहीं है, काउंसलिंग कर दी है. जो होने वाले हैं वो वही होंगे, जो नहीं हो सकते तो उसको आप बात ही नहीं कर सकता. Only those will be counseled who are suggestible, who have thought कि आप ठीक कर सकते हैं. तो ये जिसने सोच लिया, वो एक्ट भी ज्यादा बेहतर हो सकता है बायोलॉजिकल से, क्योंकि बायोलॉजिकल में टाइम लगता है. ठीक है. So we have to understand the biology behind these systems as well. So personality disorders don't exist. Personality traits exist. Migraine is also an activation of the cells, macroglia, astrocyte. And hysteria is dissociative कहते हैं. That is again beautifully explained here. It's all the supraspinal and suprathalamic issue. Thalamus is the sensory gate of the brain. जो भी बॉडी में जो भी सेंसेशन हुई है, जो घबराहट और कपकपाहट, ये तमाम चीजें जो भी हुई हैं, ब्रेन पे उसका क्या होगा? अगर सुपरास्पाइनल यहाँ पे खराब होगा तो पेन सिम्पटम्स आ जाएंगे. कॉग्निटिव पे पहुंच गए तो यू हैव डिसोसिएशन सिस्टम डिस्टर्बेंस. अगर थैलेमिक का प्रॉब्लम होगा तो देयर विल बी अ डीपर्सनलाइजेशन और डिसेंसिटाइजेशन. So all the psychological terms can be related to the biology. Very good papers are available on this. बहुत जी, बहुत सी. Oh, all right. So we're coming towards the end. Okay, so beautiful definition.
definition on antidepressant. These are those medications which increases the neural cells, their formation, their stabilization, synapse formation. In short, आपके brain system को जो power दे रहा है, fertilize कर रहा है, उसकी capacity increase कर रहा है, that is antidepressant. ये argument ये अजीब है कि दवाइयाँ क्यों खानी है, कब खत्म होगी? तो I just tell them कि भाई आप जैसे ऐनक पहनेंगे जब तक आप पहने आपकी मर्जी है. तो जब आप कुछ विजुअल देखते हैं तो 60,000 टाइम आपका ब्रेन स्टिमुलेट हो जाता है. तो पुराने जमाने में और बातें थी, आप जितना ब्रेन यूज कर रहे हैं उतनी खा लें. नहीं खाएंगे कुछ नहीं होगा, उतनी बत्ती नीचे आ जाएगी. 40% से 30% आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया. तो आप अपनी मर्जी तरह मर्जी खाएं, and that makes a wonderful effect usually. कि हाँ नहीं मैं ठीक रहना चाहती हूँ, खा लो. एक और बहुत बढ़िया फ्रॉड, withdrawal symptoms. एंटी ब्लड प्रेशर की गोली खत्म की, ब्लड प्रेशर वापस आ गया. That is not a withdrawal symptom of the blood pressure medication. एंटीडिप्रेसेंट खत्म की, वो चला गया फायदा. उसका नाम आपने रख दिया withdrawal symptoms. So I tell them there is no side effect. जो साइड इफेक्ट आया वो आपका vulnerability factors है. 50,000 बंदे ठीक बैठे हैं, उनका जब आप रिसर्च करते हैं, साइंटिफिक कंपनीज रिसर्च करती हैं, उसमें हर किस्म का जीनोम उसके अंदर आ गया. They have to report it. We have to be very careful telling it's a side effect. One of the best medications, पाकिस्तान में क्लोनिडीन नहीं है. क्लोनिडीन is a wonderful medication. 2 दवाइयाँ मेरी ख्वाहिश है, अगर कोई आप में से रेडियो साहब से पावरफुल लोग नैट्रेक्सोन ले आए और क्लोनिडीन ले आए, पूरा मुल्क ठीक हो जाए. जब तक नहीं आती, propranolol is one of the best medication. It can bring down your systems. Clonidine नहीं यूज हो रही, you can use alpha blocker and you can use a beta blocker. Propranolol खुल के दे, कोई इशू नहीं है उसका. 40, 80, 120, and it works beautifully. It's a mitochondrial activation stabilizer. You don't have any other mitochondrial activation stabilizer. ये देंगे तो पैनिक ठीक होगा. All right, we're coming towards the end. We'll skip some slides, and I want to show you certain. ये बाकी repetition है, and let me see if I can find something interesting. Catatonia, all about the muscular genetic issue. Not everyone will get a catatonia. A person who develops EPS is basically being prepared for the future Parkinsonism. So brain actually weak है, उसका सिम्टम इसलिए आपके पास आया है. You have to be very careful, of course. But इन्होंने कैटाटोनिया देख रहे थे और वहाँ तभी ये बताया जाता था कि it's a symptom and the cause has to be found. The muscle is in an asynchronous condition. वो एक्टिवेट काम नहीं होना है उसका. All right, I will take a break over here. I think it will bring in session, and I'll spare a few minutes for any question and answers. Please. Wonderful. Very well presented paper and with depth. Come to you. Professor Dr. Liman, and my area of expertise is metabolic public health psychiatry, artificial intelligence, and nutritional medicine. You see, right now in Harvard and Stanford, I have worked a lot in New York City, interacted with the metabolic psychiatry, metabolic medicine, ketogenic diet therapies are being promoted. People are being tapered off of other medicine and minimum medicine with the healthy lifestyle. Assume कि आपकी 3 दिन हम बिजली बंद कर देते हैं, मूविंग पे होटल के रूम में, खाना आपको सिर्फ देते हैं रोटी और पानी. ये मैं सिनेरियो पाकिस्तान का दे रहा हूँ. 1 हफ्ते बाद आप पागल साइकेट्रिक नहीं होंगे तो क्या होंगे? पहले बेसिक एम्यूनिटीज लाइक ब्लड ज्यादा दीजिए ताकि रिडक्शन हो. प्लीज डोंट. Now people are doing anti-pharmaceutical company. We are not against medicine. Minimal medicine, healthy lifestyle, sleep, good medicine. USA में लोग sleep deprived हैं. अगर promote कर रहे हैं sleep, मोबाइल के यूज का इफेक्ट है. तो डॉक्टर साहब, we have to manage any issue, whether it's a CAD, whether it's a mood disorder.
Look at that. We are a poor country. We cannot apply the medicine of England, NHS, Canada, Jeddah, in New York. Thank you very much for your input. You didn't commenting on meta. Either you don't know metabolic psychiatry or. I want to answer this. So there is a big social problem. The greatest discrimination. What is the greatest discrimination? The greatest discrimination which discriminates all of us is the genetic materialism. The genetic material. If somebody is highly qualified with a good gene, he will go much ahead. तो गरीब होगा, उसका साइकिल आपने पढ़ा है सोशियोलॉजी में, उसका बहुत मुश्किल है आगे जाना. एक वहां से रेस शुरू कर रहा है, एक यहाँ से रेस शुरू कर रहा है. But today's discussion is not about sociological issue. Whatever you were saying are very respectful and very good things, and but sociologist has to see. Today's agenda was, if biologically, it's another question that medication is affordable or not. I would like to have the best medication for my brain. I don't care what the liver person is doing, diabetic is doing. They are doing their stuff. But we are poor advocates of the brain. But the brain के लिए दवाई नहीं होगी तो पूरा system ऐसे ही चलता जाएगा. My answer is, let it be biological. Let's find the best medication. Biopsychosocial speaking. That's all rubbish. Biopsychosocial is rubbish. You can't just go Listen to my answer first, sir. Let me answer. No, I have to correct you. You are just You can correct at misguiding. your time. You are most welcome. You are But misguiding. This session was about bring the biological system so that psychological and social system can be created. If you look at the history of psychosocial, it was created by George Engel, जो बहुत अच्छा डॉक्टर बनना चाहता था. उसके मामू बहुत अच्छे डॉक्टर थे. उसको समझ नहीं आ रहा था कि अच्छा डॉक्टर कैसे बन गए. A system theory was in vogue. Psychoanalysis खत्म हो रहा था, social worker ऊपर आ रहा था, and biology was just born. नई दवाइयाँ थी. तो उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने क्या सिस्टम बनाते हैं बायोसाइकोसोशल मॉडल. Sociologists आप भी देखें, psychologists भी देखें, biologists भी देखें. And that system has gone away in the West. If you look at the Harvard system, they are making capacity-based, need-based system. Now, if the psychologist is saying that there is no way of biological medication, I will consider them my enemy. I agree. जो ECT रोके, जो दवाई रोके, she's an enemy. But she's one of us. She has to be told कि यार आप अपने तौर पे सही सोच रहे हैं, but the psychologists and psychologists, they're out of the system. दवाई दें, बिल्कुल वैसे जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई देते हैं. आप ब्लड प्रेशर वालों को तो नहीं कहते कि आप जाके एक्सरसाइज करें. कहते होंगे, but medication is first. When the medication comes, that is actually, इसको आप स्टेटमेंट सुने, migraine and depression. That is the first sign of brain failure. हार्ट अटैक वाले को आप कभी लेक्चर नहीं देंगे कि सोशल बेहतर करें, फलानी चीज बेहतर करें. हार्ट अटैक, when you have a migraine, your brain is failing. Your system is unable to be charged by the sleep network. The network is down. How to improve that network? We have to find the vulnerability. Definitely we have to reduce the stress. We have to improve our combined cognition. This is a war. Nobody is understanding what is happening. और मैं फिर इसका कई साल मैंने साइकोएनालिसिस में बात की, स्पिरिचुअलिटी में बात की, साइकोलॉजी में बात की, all wasted. The कोर्ट में जाके आपने सुप्रीम कोर्ट के जज को बताना है कि बीमारी है कि नहीं. So only thing is पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में उसको तो कुछ नहीं समझ आता. जी. बाहर समझा सकते. I've tried to make my answer. आपने सही कहा, क्योंकि प्रैक्टिस में जब हमारे पास भी कोई साइकियाट्री के पेशेंट आते हैं, तो हम जब उनसे तफसील या डिटेल लेते हैं, तो वन ऑफ दी लेडीज पेशेंट थी, तो उसके अटेंडेंट ने क्या, यार क्या आप ये देख इतनी बातें कर रहे हो. अब उधर वो एक न्यूरो सर्जन के पास गए, उसके फोटो में गटिया लगाई, आँख निकल लाइट लगाई और उसने बड़ा अच्छा काला फोटो निकाला. उनको उसको बीमारी का पता चल गया. आप इधर हमारे बच्चियों से क्या सवाल पूछ रहे हो, क्या ये लंबी आपने कहानियां कर रहे हो, पता चल रहा है दवाई लिख के दो. तो इस तरह हमारी जो सोसाइटी है, they are far away, stigmatizing. तो मेरे सर होते थे मुबशिर साहब, वो कुरान की एक आयत भी पढ़ते, सुमुन हुक्मुन उमयुन फहुम ला यरजुन. और क्या आप पूछते हो मेरे कारोबार का? आईने बेचता हूँ मैं अंधों के शहर में. वाह वाह, आईने बेचता हूँ अंधों के शहर में.
any questions or comments? Welcome. इंग्लिश देखना होगा Questions से बगैर नहीं बता सकते. Questions आएंगे. My name is Dr. Muhammad Nabi, President of Pakistan Institute of Psychiatry and Behavioral Science. My question is this: you said an impulsive patient, there is change in the brain, liquidity change, and whenever we are applying the DBT and the borderline personality disorders, there is too much impulsivity. Kindly elaborate this. So एक और जाति क्या हुई कि हमने तमाम खवातीन को borderline personality trait चिपका दिया. ठीक है? And the reason was there is impulsivity network issues, there is inattention network, hypervigilance is there, and this is always coming with anxiety network. And all the system gives rise to mood disorders at a later stage. So आपने borderline को आपको पता है borderline के 9 points हैं. वो 9 points को आप 256 combination में use कर सकते हैं. Every borderline will be different. Every depression will be different. Every anxiety will be different. But all the brains are same. Systems are same. तो जब भी कोई मसला आएगा, कोई भी disorder आप लेके आएंगे, I'm telling you my technique based on the research and the scientific. It's जो network होंगे वही खराब होगा. तो ये borderline है, ये impulsive network खराब है इसका. Threat appraisal system खराब है. वो threat को check करके भी नहीं बता सकता कि anticipation में क्या होगा. तो जो जल्दी काम करता है उसका यही सिस्टम खराब होता है कि वो रुक नहीं सकता, पहले काम करता है फिर सोचता है और फिर भी इतना नहीं सोच सकता कि वो अपने काम को चेंज कर सके. सो ये इसका borderline का लेटेस्ट चल रहा है. बहुत सारे 8-9 बायोलॉजिकल इश्यूज चल रहे हैं. There's some problems with opioid system. जो रिजेक्शन महसूस करता है उसका क्या प्रॉब्लम है? रिजेक्शन. There is a rejection sensitivity. वो रिजेक्शन सेंसिटिविटी कैसे आएगी? There are combination of cells called midline cortical cells. उसके अंदर there are endocannabinoids which are deficient. Opioids deficient है. Nature ने जो आपको pleasure neurotransmitters दिए वो किसी में क्या होंगे? They will get more upset. किसी की बात नहीं सुन सकेंगे और फौरन गुस्सा आएगा और उसके बाद सोचेंगे भी नहीं. जब ये सर्कल चलता रहेगा that's borderline. और सबसे खतरनाक borderline कौन सा होता है? When a person's one parent is obsessive and the other is impulsive. फिर true borderline अपनी खूबसूरती के साथ आया है. यहाँ पे obsession and impulsive. जब आप अपने सारे पेशेंट में देखेंगे ये 2 पैटर्न जो है and there are 4 kinds of borderlines. Borderline, somebody with obsessive symptoms with some attention deficit, more attention deficits, some obsessive symptom, more attention deficit, more obsessive symptom, or combination of this above 3. So there are a lot of combinations, a lot of traits are playing. And every borderline जो आप इस तरह सोचेंगे तो अब आपके सारे केस हल होना शुरू हो जाएंगे. You will move to reduce impulsivity. PAN reduction is done by antipsychotics. PAN booster is done by the antidepressant. PAN reduction in stabilization can be done with benzodiazepine. PAN engine improvement can be done by the stimulants. इसका मतलब है कि ये जो दवाइयां हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत झिझक रही हैं. अभी आप खुल के खेल ही नहीं रहे, खेला ही नहीं आपने. एक एंटीडिप्रेसेंट दिए तो आप रुक गए. You can use combinations, you can help with the stimulants, you can take the benzodiazepine. जब शुगर होता है तो उन्होंने तो कभी इतना नहीं सोचा कि कौन सी GLP-1 देना है, इंसुलिन देना है, 2, 3, 4, 5, 6, all are using combinations. इससे तो हम एक दवाई पे 1.5 में चले जाते हैं. देखिए यहाँ पे हमारे बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट भी बैठे हैं, डॉक्टर प्रताप तौफीक से भी बात करते हैं, बताएंगे कि कोई सालों से बायोलॉजी कर रहे हैं. लेकिन दिस इज अ टाइम दैट वी हैव टू टेक एवरीबॉडी ऑन बोर्ड. अकेले नहीं खेल सकते, साइकोलॉजिस्ट के बगैर नहीं खेल सकते. इट्स अ बायोलॉजिकल वॉर. पूरा मुल्क हमारा आगे जाना चाहिए. स्टिग्मा कब कम होगा? जब ज्यादा से ज्यादा हम लोग खुल के खेलेंगे. हम आई थिंक वेयर इन अ कलेक्टिव बर्नआउट स्टेशन. डॉक्टर नहीं पूरा मुल्तान को नहीं संभाल सकते. नहीं डॉक्टर साहब आए ये भी 10-20 साल में ही बर्नआउट. अभी से भी हैव टू क्रिएट कनेक्शंस. आप मैं अगर 20 साइकोलॉजिस्ट को पढ़ाता हूँ तो एवरीवन शुड बी माय एम्बेसडर. डॉक्टर साहब जहाँ से आए इफ ही टेक्स दिस मैसेज बिकॉज द वर्ल्ड इज माय मैसेज. वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज. लाहौर में किला तो नहीं है, कराची तो नहीं है, पाकिस्तान में किला तो नहीं है. सब सामने होंगे तो कुछ आगे चल सकेंगे. जी मैडम आपने सवाल. Assalamu alaikum. I am Dr. Samia Ittefaq from KPK. Thank you so much, sir. आपका लेक्चर मुझे बहुत अच्छा लगा.
मेरी खुद भी थिंकिंग इसी डायरेक्शन में है कि पहले हार्डवेयर को रखें फिर सॉफ्टवेयर को रखें। जब हम हार्डवेयर ठीक करेंगे उसके बाद हम सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर पे काम किए बगैर सॉफ्टवेयर पे काम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा था। इसमें आपको दो एग्जांपल्स देती हूँ जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपने पेशेंट्स के ऊपर। तो उसमें एक पेशेंट जो है ADHD के पेशेंट हैं, उनके ऊपर जब मैंने काम किया तो उनके ऊपर जिस तरह आपने बताया है कि GLP-1 जो एंटी डायबिटिक ड्रग्स हैं वो उसके कुछ डिजीजेस में काम कर सकती हैं, तो मैंने एंटी डायबिटिक्स कुछ ADHD पे ट्राई किए हैं और उन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है अटेंशन इंक्रीज करने में। सेकेंडली, जब मैंने उनको कहा कि आप खाने में देखो, ट्राई करो क्या चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है, तो जब क्योंकि अगर एंटी डायबिटिक उन पे अच्छा पड़ रहा है विदाउट डायबिटीज़, ठीक है, उसके कुछ फिजिकल सिम्टम्स ADHD के ठीक हो रहे थे, तो फिर मैंने उनको जैसे सर ने न्यूट्रिशनल साइकेट्री की बात की, तो मैंने उनको कहा खाने में भी आप देखें। तो उन्होंने मुझे बताया कि खाने में अगर वो जामुन खा रहे थे तो नेक्स्ट डे उनके सिम्टम्स ठीक थे। अब दूसरी चीज़ जो उन्होंने बताई वो ये बताई कि उन्होंने जो करेले हैं उनको जब खाया तो उसमें नेक्स्ट डे उनके सिम्टम्स जो है फिजिकल सिम्टम्स ऑफ ADHD वो कम थे। सेकेंड एग्जाम्पल है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। उसमें मेरे पास एक पेशेंट है जो सालों साल से बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो बहुत सीवियर उसको है, तो उसमें हमने इस तरह से किया कि उसको बीटा हिस्टामीन दिया। ठीक है, अब बीटा हिस्टामीन जो है वो बेसिकली टिनाइटिस वगैरह के लिए यूज होता है। ठीक है, लेकिन बीटा हिस्टामीन जब मैंने उसको, क्योंकि वो बॉर्डरलाइन इनअटेंटिव टाइप थी ना, तो उसमें मैंने यूज किया तो जो बीटा हिस्टीन है उससे उसकी सिम्टम्स बहुत बेहतर हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उससे कहा खाने में चीज़ों को ट्राई करो तो क्या चीज़ आपके साथ अच्छी आती है, तो उसने मुझे बताया कि मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की, तो मोरिंगा ने उसको फ़ायदा दिया, और दूसरा जो सीड्स आती हैं 4 सीड्स जिसको हम कहते हैं ना, तो वो उसने ट्राई किए तो उसने फ़ायदा दिया। मतलब इन शॉर्ट जब मैंने देखा तो जो चीज़ उसको मेडिसिन में फ़ायदा दे रही थी वही चीज़ उसको उस चीज़ में भी फ़ायदा दे रही थी। और जब मैंने उसको स्टडी किया तो फिर मुझे पता चला कि जो आप बता रहे थे ना कि अभी यही है कि या तो माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे काम कर रही है या सेलुलर लेवल पे चीज़ काम कर रही होगी, तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रियल लेवल पे काम करती, जैसे कि मोरिंगा था, या कुछ चीज़ें सेलुलर लेवल पे काम करती जैसे बीटा हिस्टीन थी, वो पाथवेज में कहीं काम कर रही थी, लेकिन हमें इतना ज़्यादा डीपली पाथवेज को पढ़ा नहीं होता, इस वजह से हमें याद नहीं रहता। थैंक यू सो मच। Professor Mengalani from Bhutan, Dr. Usman, I have been really a fan of you. Really, I am disappointed. It was a very good lecture indeed. I was थोड़ा सा देर से आया, लेकिन दुनिया जो आपने सुनी देखिए आपने बहुत ही क्रॉस सेक्शनल में लिया है जिंदगी का, और आपने वो जो लॉन्ग अप्रोच है वो नहीं। अगर हम हिस्ट्री में देखें तो 1512 एक बेंचमार्क है जिसमें सोसाइटी चेंज होना शुरू हुई, और दी सो कॉल्ड ग्रेटर सोसाइटीज, वेस्टर्न सोसाइटीज या सुपीरियर सोसाइटीज बननी शुरू हुई। तो दे नॉट बी डिफाइंड, इंटेलिजेंस ज़्यादा नहीं शुरू हुई लोग। अब भी मेरा ख्याल है जितने भी नोबेल प्राइज विनर हैं वो शायद जूस में ज़्यादा है। हाउ कैन वी डिफाइन कि इनकी भी खुराक अच्छी है, इनके भी जीन्स अच्छे हैं? ये बड़ी खतरनाक बात आपने की है। इसी तरह की एक बात जर्मन फासिस्ट ने भी की थी कि एरियन था प्योर रेस। फिर बात ऐसे आगे जाएगी, सिर्फ ये दवाई तक नहीं रहेंगी, फिर यूजेनिक्स की बात होगी। नहीं, आपने लफ्ज़ जो आपने यूज किया था ना कि सारी चीजें सोशल कल्चर पैसे होंगे बेटर सेफ हो सकती है, जहाँ पैसे नहीं होंगे वहाँ पे बेटर सेफ नहीं होंगे। एक जनरल सी बात है कि अगर आप नहीं मेरा दर्ज है ऐसा मनी अब ज़्यादा अच्छी तो वही दे सकते हैं ना, उससे अच्छी सोसाइटी में नहीं पैदा कर सकते। लेकिन एक्चुअली हमारे यहाँ न्यूरोलॉजिकल साइकियाट्री का एक नुक्स ये है कि हम इस ऑर्डर के पैराडाइम में चीज़ों को देखते हैं।
डिसऑर्डर के अलावा भी तो जिंदगी है। डिसऑर्डर कितनी परसेंट है, हम क्यों अच्छे हैं, हमें मुरवत कितनी है, हमें जोरास्टी कितनी है, हमें एक दूसरे की टॉलरेंस कितनी है, क्या उसको भी हम जीन से डिफाइन करेंगे? ये सारी चीजें कल्चर सिविलाइजेशन पैदा करते हैं और उनका कल्चर सिविलाइजेशन साइकोलॉजी इसके बारे में थोड़ी कहते हैं ना कि any disorder or any human functioning is definitely defined by biological paradigm, but it is felt by the psychological paradigm and it is shaped by the social paradigm. Wow. So how can you get rid of all these things? Very good lecture indeed, और we should go for these, लेकिन इसके जो आप repercussions, philosophical repercussions हैं, वो थोड़े से मुझे नहीं सकता है। Maybe I might be wrong कि मैंने शायद गलत समझा है। Thank you very much. असल में जो मेरा पॉइंट ये था, ये डॉक्टर साहब ने सोशियोलॉजिकल थोड़ा टर्निंग करवा दिया। The question is कि today I just talked about pure scientific information, how is it happening? चाहे जो यूज करे चाहे मुस्लिम ये बात हम अब डिस्कस नहीं कर रहे, because right now I'm not addressing a sociological issue, a psychological issue. It's just about the brain. नहीं आपने कहा रमेश नहीं रमेश नहीं लेकिन डॉक्टर साहब ने खाने की बात है आपने देखा ना एक बंदा है जो कि न्यूट्रिशनल लेवल से उसने कहा खाना बहुत अच्छा है, दूध में कैल्शियम है, पानी उसमें जाना बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात है। बट जब हार्ट फेलियर होता है क्या आप उसको खाना खिलाएंगे तो उसको ट्रीटमेंट देंगे? सर खाना खिलाएंगे, टेस्ट डाइट ओके वो कराएंगे, लेकिन पहले आप केस लेके जाएंगे, पहले उसको इंजेक्शन देंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेज देंगे। सो वो पॉइंट था कि जब हम बाकी स्पेशलिटीज की बात करते हैं तो वी आर नॉट वेरी बायोलॉजिकल ओरिएंटेड। जो आप बातें कर रहे हैं वो तो बहुत जरूरी है, ह्यूमैनिटीज बहुत जरूरी है इंसानियत के लिए, लिटरेचर के लिए, पोइट्री के लिए। आज का फोकस बायोलॉजिकल है, इसके आज भी बायोलॉजिकल से बाहर है। वो आपने बड़ा हार्श वो हो सकता है वो तो फिर नाम देखें वो मैं वापस ले लेता हूँ, वो तो पिछला कैश वापस आ रहा है। थैंक यू सर। क्या भाई क्लासीफाई कर दें भाई You have to be cognitively flexible. बात जैसा ठंडी आने वाले जमाने में आप फैन तो वॉश भी आप नहीं अच्छी बात है आपने नया फ्लेवर है, एक नया फ्लेवर है। नीड अ वेरी तो ऐसा ऐसा भी इसको करेंगे शेक। सर जी जी इधर जी जी शायद सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लेक्चर था। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरी अंडरस्टैंडिंग इस तरह से नहीं है। मैं सुन भी रही थी कि हम ह्यूमैनिटीज और उसको सोशल जो एस्पेक्ट है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, बट बायोलॉजी को भी हम नहीं कर सकते। बट सर आपने पाथवेज की बात की कि उनकी डिस्टर्बेंस होगी, आपकी केमिकल्स की डिस्टर्बेंस होती है, बट एक्चुअली वो डिस्टर्बेंस कॉज क्या करता है? अभी तक मेरा ख्याल है हम इस चीज़ पे नहीं पहुंचे कि उन पाथवेज को डिस्ट्रैक्ट क्या करता है। हम कहेंगे कि आपके डोपामीन है, सेरोटोनिन है, देन हम ऑयल्स की बात करते हैं, कैल्शियम चैनल्स हैं और ये चीज़ें, बट उनको कौन सी चीज़ डिस्टर्ब करती है? क्या ये हमारी थिंकिंग है जो उस चीज़ को अफेक्ट करती है, हमारे सोचने का अंदाज? और अगर हम सोचने की बात करते हैं तो थिंकिंग कहाँ से प्रोड्यूस होती है, कहाँ से हम सोचते हैं, क्या चीज़ है? ये सारी आई थिंक डिबेटेबल है सर। इसके ऊपर अगर आप बायोलॉजिकली देखो बायोलॉजिकली इज नॉट डिबेटेबल बिकॉज वी आर ऑल द ब्रेन। देखो पहली बात है कि ब्रेन इज द मास्टर ऑर्गन। ब्रेन के जो न्यूरॉनल सेल बने थे कम्युनिकेशन के लिए, प्रॉब्लम आएगी न्यूरॉनल जो उसका लाइफ साइकिल है, न्यूरॉन का माइग्रेशन सेटलमेंट। जब आपको पता है नर्व न्यूरो माइग्रेशन करता है फीटस में, तो जो नर्व का जो सफर है उसमें जहां जहां प्रॉब्लम आएगा, अगर डैमेज आएगा फॉर एग्जाम्पल उसकी रेप्लिकेशन में प्रॉब्लम आ गया, जेनेटिक सेल मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम आ गया, उसके चैनल में एक प्रॉब्लम आ गया। मिसाल के तौर पर BCL APL एक बहुत मशहूर कैंसर का एक है मार्कर, अगर वो हो तो यू हैव ALL कैंसर ल्यूकीमिया, ठीक है। उसी मार्केट में अगर प्रेजेंट हो तो साइकियाट्रिक सिम्टम्स आना शुरू हो जाएंगे। तो प्रॉब्लम नर्वस सिस्टम में कहीं पे। अगर आप पूछें थिंकिंग कहाँ से होती है, थिंकिंग हमारी जो एक्टिव उसमें कई किस्म की थिंकिंग हो सकती है। आपने रिकग्निशन देखा, रिकग्निशन ट्रेट है, तो थिंकिंग के हम नेटवर्क्स पे गए कि कहाँ कहाँ पे नेटवर्क्स चलते हैं। नेटवर्क्स नहीं, बट वो नेटवर्क्स एक्टिवेट कैसे होंगे? क्या चीज़ को एक्टिवेट करेंगे? We only know 10% of the brain. 90% we don't know right now. So अभी कुछ पता नहीं हमें। 2000 neurotransmitters है ब्रेन में, we know those 2000 neurotransmitters। बहुत सारी चीजें नहीं पता, जो पता है बेचारों के पहले वो तो हम अपडेट कर रहे हैं। सर इसमें एक चीज लाइक ब्लीच सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, लाइक हमारे जितने भी पेशेंट्स
जिस एरिया से मैं बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे फेक हीलर जो उनके पास जाते हैं, कन्वर्जन का पेशेंट ठीक होकर आता है। शायद that is because the person who is going to the fake healer, they have midnight neurons, there is self-referential network, there is an autobiographical network, they are just already convinced. जो दवाई होती है 4 लोगों पे निर्भर है इसका काम करना। नंबर 1 दवाई के अंदर कुछ हो ना भी हो तो चलो प्लेसिबो एक पूरा फैक्टर है। दूसरा जो देने मतलब वो कितना कन्विंस्ड है, मैं चाह रहा हूँ देने वाले फुल कन्विंस हो जाए कम से कम। तीसरा सोसाइटी कितनी कन्विंस्ड है, चौथा पेशेंट के घर वाले कितने कन्विंस्ड है। ऑल दिस 4 फैक्टर्स कम इनटू प्ले। तो ये मुश्किल सवाल है, 90% हमें नहीं पता। नहीं पता, we have to find, we all have to find। मुझे नहीं पता, मैडम ने बड़ी अच्छी बातें बताई कि वो उन्होंने ऑलरेडी चला दी है मेडिकेशन एंटी डायबिटिक दिमाग के लिए। दैट इज वी हैव टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। आई वांट कि जो लोग इस तरह सोच रहे हैं, जैसा हम अभी ट्यूशनल इंस्टीट्यूट में बात जी सर। You are said, well said, but we have to see a person as a holistic. People do come with like diabetes, plus depression, sometimes liver disease. So we have to address them as a total patient. Definitely. I mean, I'm saying that like if I'm 61 right now, I could have 3 or 4 diseases and I have contributed and then by 70 I may have diabetes, mild dementia, and mild cirrhosis, arthritis. So you know, whenever you give the medicine, the intention that you have to see polypharmacy as a total human being. That's a new concept now. And the word is everywhere being now used to manage your disease, manage your problem. They are not, the treatment is a part of that. And correct me if I'm wrong. Systems we are talking about are those who have gone जिनकी बात करें वो सिस्टम बायोलॉजी से आगे जा चुके हैं। WP की बात करें तो आपको थेरेपिस्ट से मिलने के लिए 6 महीने चाहिए। वो तो मिलेगा, ऑलरेडी साइकोलॉजिस्ट भी बैठे हैं हमारे पास। द पॉइंट इज मेडिसिन का फॉल्ट निकाला है, जो मैंने हाईलाइट किया, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बायोसाइकोसोशल मॉडल एक्टिवली वैसे ही होगा। अब ये सिर्फ एम्फेसिस बायोलॉजी का, आज का चैप्टर हमने बायोलॉजी का खोला, जैसे होता है मुबालगा आईडी होता है, जैसे आप कहते हैं आप इंसान ही नहीं है, तो दिस डजंट मीन कि इंसान नहीं है, भाई डॉक्टर साहब इंसान तो है। वो एक शायद ना उसमें एक से बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो हाँ, वो हम वापस ले लेते हैं, कोई ऐसी बात है तो वापस ले चुके हैं, वजह से वापस ठीक है। इस सेशन का टाइम खत्म हो गया, सबसे पहले तो भाई बहुत शाबाश, बहुत शाबाश, बहुत नाइस चीजें हैं। प्रेजेंटेशन में जितना जो स्लाइड्स, क्वालिटी ऑफ स्लाइड्स थी, जो इल्म के और बड़े तहमुल से दिए सवालों के जवाब, जो इल्म ने यहाँ पे हमें लिया है, सो मेनी ऑफ अस, आई एम वेरी श्योर। और मैं बड़ा फैन साहब भी है, मैं बहुत सारे लोग आज बताए। और ये कम इल्मी है ना, मतलब ऑलरेडी टाइम काफी हो चुका है। ये कम इल्मी को अगर आप जख्म से मंसूब करें तो मैं खाली एक शेर मुस्तफी का पढ़ूंगा कि मुस्तफी, हम तो समझते थे कि होगा कोई जख्म, तेरे दिल में तो बहुत कम रफू का निकला। तो अभी इल्म बहुत आगे जाना है और only 10% we know about the pain and only 10% we know about aminotia। वेरी गुड। वाह, एक आध शेर आप भी सुना दीजिए। आशिर वाला मौसम मैं सुना दूं सर? मैं सुनाए सर, ये डॉक्टर साहब सुनाऊंगा सिंधी में तो बताए। न बुरा यूं न भला यूं, ॾींहं ॾिठे जा ख्वाब आयूं, अखियूं बंदि कंदे त कंडा ई कंडा, अखियूं खोलींदे त गुलाब जा गुल, पढ़ंदे त किताबनि जा किताब, न पढ़ंदे त कोरा कागज़। बस यार तुंहिंजे दर जी गुलामी था कयूं, न त उस्ताद बुखारी असां पाण वॾा नवाब। वाह 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 वाह। ऐं हिन जो उर्दू में मुख़्तसर समरी ॿुधाए लॻे, उर्दू में समरी कंहिं लॻे समरी ना इतने अच्छे हैं न हम बुरे हैं, बस दिन दहाड़ के हम कोई ख्वाब हैं। अगर आप आंखें बंद करेंगे तो आपको हम कांटे ही कांटे नजर आएंगे, अगर आप आंख खोलेंगे तो हम आपको गुलाब के मानद नजर आएंगे, अगर आप हमें पढ़ेंगे तो हम बहुत सारी किताबें हैं, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हम
खाली ब्लैंक पेपर है आपके लिए। वाह वाह। और बस यारो दोस्तों, आपके दर की हम गुलामी करते हैं, वैसे तो हम खुद अब बड़े नवाब हैं। वाह वाह वाह। साहिब आपको स्पेशल सर्टिफिकेट